Question number 7. The sequence an defined by an plus 1 is equivalent to under root of 3an and a1 is 1 is ये जो गिवन सीक्वेंस है an और इसको डिफाइन इसलिए किया n plus 1 is under root of 3an a1 is 1. Options are monotonically decreasing, option B is monotonically increasing, option C is monotonically increasing and unbounded, monotonically decreasing and unbounded, option D is monotonically increasing and bounded, monotonically increasing यहाँ पे monotonically increasing and unbounded, monotonically increasing and bounded. These are the options. Okay. हमारे पास जो सीक्वेंस इसने डिफाइन किए an plus 1 इसने डिफाइन किया है अंडर रूट ऑफ 3an and a1 is 1. a2 is for n is equivalent to 1, so this is 1 plus 1, that is a2. a2 is equivalent to under root of 3a1, which is equivalent to under root of 3a1 is 1 into 1, which is equal to under root of 3. a3 is under root of 3a2, which is equivalent to under root of 3. a2 is under root of 3. a4 is under root of 3a3, which is equivalent to under root of 3. a3 is under root of 3 under root 3. So a5 is under root 3 under root 3 under root 3 under root 3. ठीक है, and so on and so forth. That means the terms of the sequence are like 1 under root 3 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 under root 3. This is the sequence. ठीक है, the given sequence is like that. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली. क्लियरली 1 is less than under root 3 and under root 3 is less than under root 3 under root 3. This is less than under root 3. Under root 3, value of under root 3 is approximately 1.73. Yes, 1.73. So this is monotonically increasing. The given sequence is monotonically increasing. That means a1 is less than, a2 is less than, a3 is less than, a4. अगर आप इंडक्शन भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इंडक्शन फॉर n is equal to 1, a1 is 1, and for n is equal to 2, a2 is under root 3. a1 is less than a2, a2 is less than a3, and similarly an is less than an plus 1, because an plus 1 is equivalent to under root of 3 an, which is equivalent to under root of 3 an क्या होगा, under root 3 under root 3 under root 3 and up to n times. Okay, this is a monotonically increasing. That means this is wrong option. Monotonically increasing है ये, monotonically increasing and unbounded, monotonically increasing and bounded. ठीक है, monotonically increasing and bounded. अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये बाउंडेड है. इसके जो टर्म्स है 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3. सेकंड टर्म अगर आप देखेंगे अंडर रूट 3 का जो वैल्यू है दैट इज 1.73 इज लेस देन 3, एंड सिमिलरली दैट a1 इज 1, a2 इज अंडर रूट 3 इज लेस देन 3. अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंडक्शन, आप सपोज करेंगे जो इसके एन टर्म होगी वो भी लेस देन 3 है, एंड वी विल प्रूव इट इज an plus 1 टर्म इज आल्सो लेस देन 3. an plus 1 जो होगी वो किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 3an, which is less than, an is less than 3, that is under root of 3 into 3 into 3 under root of 3, यह है less than 3. ठीक है, which is less than 3. that means the sequences, that means, और इसके जो टर्म्स हैं सारे an is greater or equivalent, ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से. that means an is greater or equivalent to 1 for all n belongs to n means. That means 1 is lesser or equivalent to an is lesser or equivalent to 3. That means the given sequence is bounded sequence. बाउंडेड सीक्वेंस. अगर आपको ये
चेक करना होगा कन्वर्जेंस भी इसकी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 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 that it is. So carrying on both sides, so this is x square is equal to 3 times under root 3 under root 3 under root 3 under root 3 that it is. So carrying on, so this is x square upon 3 is equivalent to this, but this is equivalent to x, so this is x, that means x square minus 3x is equal to 0, that means x is equal to 0 or x is equal to 3, but x is not equal to 0 because an is greater or equal to 1 for all n is great belongs to n, that means this is not possible, this is not possible. Then x is equal to 3, that means the given sequence converges 3, that means limit as an, limit an is equivalent to 3 and tends to infinity. The given sequence is convergent sequence, the given sequence is convergent, so the given sequence is monotonically increasing and bounded sequence. ठीक है, ये monotonically increasing and bounded है. Every sequence which is either monotonically increasing or monotonically decreasing and bounded, then the sequence is always convergent sequence. So this is monotonically increasing and bounded. अगर आप इसकी देखेंगे आंसर की, उन्होंने आंसर की पे लिखा है monotonically increasing, but this is monotonically increasing as well as bounded also. ठीक है, option D is right, not option B. Okay. Now question number 8 is the sequence an where an is 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5 plus converges to options are 1, option B is 0, option C is 1 upon 2 and option D is none of the above. None of the above. Sequence. यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये है 1, 1 upon 2, 1 upon 3. अगर ये सीक्वेंस ऐसी होगी an is equivalent to, ये सीक्वेंस अगर ऐसी होगी 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, dash dash dash, then this sequence is convergent and converges to, इसका जो लिमिट है, लिमिट an as n tends to infinity is equal to limit n tends to infinity 1 upon n which is equivalent to 1 by infinity, that is 0. That means this sequence converges to 0, but this is not like that. This is 1 plus 1 upon, this is the sum of the terms, so we can write it as summation an can be written as summation 1 upon n. For n is equivalent to 1, this is 1. For n is equal to 2, this is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 3. And by p test, this is divergent sequence. ये जो अगर आपको पता है summation un is equivalent to summation 1 upon raised n raised power p is convergent for p is greater than. This converges for p is greater than 1 and diverges for p is less or equivalent to 1. Here it is n is 1, so the given series, the given sequence diverges. ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेंगे, ना 1 को, ना 0 को, ना 1 upon 2 को. That means none of that, क्योंकि ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही. Now question number 9 is question number 9. If summation n runs from 1 to infinity, an is convergent, then for some finite number alpha greater or equivalent to 1, the series यहाँ पे इसने 2 सीरीज ली. The series is, first series is summation n runs from 1 to infinity an. ये वापस यही सीरीज है जो ये खुद कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट है. And the second series is summation n runs from 1 to infinity alpha an. What is alpha? It is a finite number. Alpha is a finite number greater or equivalent to 1. ठीक है. Then options are
Option A. First is convergent. First is convergent. Option B is second is divergent. Second is divergent. Option C is both are convergent. And option D is both are divergent. Both are divergent. It is given that the given sequence summation n runs from 1 to infinity n is convergent. Therefore, some finite number alpha is finite number. When this is convergent, that means it is partial sum is convergent. That means limit n tends to infinity a n. As you can see, said to be convergent if its partial sum is convergent. That means limit a n is some finite number L exists uniquely and finitely. Suppose L. अब अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे किसी फाइनाइट नंबर से अल्फा से, then this is equivalent to alpha times L. That means this series is again convergent because alpha is a finite number. This is convergent. It is given that this is convergent. First is obviously convergent. Option A है first is convergent. That is true because it is given that this is convergent. Now this is ये कह रहा है second is divergent. No, second is not divergent because second is summation n runs from 1 to infinity alpha times a n. Summation n runs from 1 to infinity a n is convergent and alpha is a finite number, so this series is again convergent series. C is both are convergent and D is both are divergent. Both are convergent. ये भी convergent है और ये भी convergent है. That means option C is right option. Both are convergent. Now question number 10 is question number 10. The series summation n runs from 1 to infinity n cube plus 1 raised to the power 1 upon 3 minus n whole power p is options are option A is convergent for p is 1. Option B is divergent for p is equal to 1. Divergent for p is equal to 1. Option C is divergent for all values of p. All values of p. And option D is none of these. हमारे पास एक सीरीज है समेशन n runs from 1 to infinity n cube plus 1 whole power 1 by 3 minus n raised to the power p. इस p का अगर हम वैल्यू देंगे 1, क्या ये कन्वर्जेंट है? अगर p देंगे 1, क्या ये डाइवर्जेंट है? क्या अगर हम p का कोई भी वैल्यू देंगे, क्या ये डाइवर्जेंट है या इनमें से कोई नहीं है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कन्वर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1. अगर हम p देंगे 1 फॉर p इज इक्वल टू 1, वी हैव ये क्या है? सीरीज समेशन n runs from 1 to infinity n cube plus 1 power 1 upon 3 minus n power 1 because p is 1. This can be written as, अगर हम n यहां से बाहर लेंगे कॉमन, so this is n times n cube यहां से मैं बाहर ले लूंगा क्योंकि इसको आएगा यहाँ पे होल पावर में 1 upon 3, so ये बाहर आएंगे n, that means this is 1. ठीक है, n क्यूब यहां से मैं इस टर्म से मैं n क्यूब बाहर ले लूंगा, यहां से मैं n ले लूंगा. ठीक है, क्योंकि इसका जो पावर है ना वो है 1 upon 3 प्लस ये 1 है, इसका होल पावर है 1 upon 3, यहाँ पे आएगा 1 upon n क्यूब, होल पावर है 1 by 3 माइनस n मैंने बाहर लिया, सो दिस इज 1. ओके, दिस इज लाइक दैट. नाउ अप्लाई बाइनोमियल सीरीज. बाइनोमियल सीरीज आपको पता होगी, यहाँ पे मैं वो भी लिखूंगा बाइनोमियल सीरीज भी. बाइनोमियल सीरीज ये है 1 प्लस एक्स रेजर पावर n किसके बराबर होता है? ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन चूज 0 जैसे आप लेते हैं. एन एक्स प्लस होता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2
डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डाइजेशन. ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स इट इज 1 अपॉन एन क्यूब एंड इंस्टेड ऑफ एन एन इज 1 अपॉन 3 हियर. सो दिस इज 1, बाहर ऑलरेडी एन है, ये एन बाहर है. 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है 1 अपॉन 3, एक्स क्या है 1 बाई एन क्यूब, प्लस उसके बाद क्या आएगा n इंटू एन माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 एक्स स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन एन क्यूब स्क्वायर प्लस डेल्टा. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में रखूंगा एंड लास्ट में क्या है माइनस 1. ओके, विच इज इक्वल टू n टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब प्लस डाइजेशन. इसको टर्म को मैं आप नहीं लिखूंगा प्लस डाइजेशन. लास्ट में क्या है इसको माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गई, ये दो टर्म्स कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स 1 अपॉन 3n क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा पावर 1 बाई एन, यहाँ इसके बाद आएगा 1 बाई एन का पावर होगा, ये इंक्रीज डिनोमिनेटर में एन का जो पावर है ना वो इंक्रीज होगा. मैंने यहाँ पे एक ही टर्म लिखी, इसको लिखेंगे प्लस डाइजेशन. ठीक है, एन क्यूब यहाँ पे एन स्क्वायर है, सो दिस इज 1 बाई 3n स्क्वायर प्लस डाइजेशन. ओके, अगर हम ये सीक्वेंस देखेंगे ये बिहेव कर रही है 1 अपॉन एन स्क्वायर को. लेट हम एक और सीरीज यहां से लेंगे, समेशन n runs from 1 to infinity vn is equivalent to 1 by n square. Now limit n tends to infinity un upon vn is equivalent to un. This is the nth term, so this is 1 by 3n square divided by vn. उसका रेसिप्रोकल होगा, so this is n square upon 1. n square cancel, which is equivalent to 1 upon 3. 1 upon 3 is not equivalent to 0, not infinity. We know that the comparison test, which is also called the limit form. लिमिट फॉर्म का स्टेटमेंट आपको पता होगा. लिमिट फॉर्म का स्टेटमेंट है इफ समेशन un एंड समेशन vn आर टू पार्शियल टर्म सीरीज such that if summation un and summation vn are two partial term series such that limit n tends to infinity un upon vn is equivalent to l, where l is a non-zero finite number. L is a non-zero finite number, then the two series converges or diverges together. That means the two series behaves alike, either both are convergent or both are divergent. Here the series summation vn, these two series, the limit n tends to infinity un upon vn is equivalent to l. L is here 1 upon 3 and 1 upon 3 is non-zero and finite number. That means the two series un and vn converges or diverges, either both are convergent or both are divergent. But we know that the series summation vn is equal to 1 upon n square is convergent by p test, because we know that summation 1 upon n raised to power p is convergent for p is greater than 1. This series is always convergent for p is greater than 1, is always divergent for p is less or equivalent to 1. Here p is equivalent to 2, that means greater than 1. So this is convergent, that means the given series is convergent. That means this is convergent. This is convergent for p is equal to 1, that means option A. The given series is convergent for p is equivalent to 1. ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे रियल एनालिसिस से इसने लिया है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है. ओके, द गिवन सीरीज is convergent for p is equal to 1. Now question number 11 is the series x plus x square upon 2 plus x cube upon 3 plus x4 upon 4 plus delta x. Options are, option A is converges for x is greater than 1. Option B is converges for x is less than 1. Converges for x is less than 1. Option C is converges for x is equal to 1. Converges for x is equivalent to 1. And the last option is converges for all values of x. Converges for all values of x. Okay. यहाँ पे अगर आप देखेंगे nth टर्म un is equivalent to फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म. nth टर्म क्या होगी x raised power n upon n. ठीक है. एंड
यू एन प्लस वन क्या होगी, एन प्लस वन की टर्म होगी एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. Now apply the D'Alembert ratio test. D'Alembert ratio test says us if summation D'Alembert ratio test. D'Alembert ratio test says us if summation un is a positive term series such that limit n tends to infinity un plus 1 upon un is equivalent to L. Then the series summation un converges for L is less than 1, diverges for L is greater than 1 and the test fails for L is equal to 1. अगर L 1 होगा फिर उस वक्त हम D'Alembert रेशियो टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, हमें कोई और टेस्ट देखना है. अगर ये लिमिट होगा किसका, लिमिट un प्लस वन अपन un का, अगर ये लिमिट होगा लेस देन 1 देन द गिवन सीरीज समेशन un कन्वर्जेस. अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा देन द सीरीज डाइवर्जेस. हम यहाँ पे चेक करेंगे यही लिमिट, अगर लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट है, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्जेंट है. ठीक है, दिस इज un एंड दिस इज un प्लस 1. देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 upon un is un plus 1 is x power n plus 1 upon n plus 1. यहाँ से डिवाइड है, मैं इसको मल्टीपल करूंगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, सो दिस इज n upon x raised power n. बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो दिस इज x एंड दिस इज nx डिवाइड बाय n plus 1. यहाँ पे इसको लिमिट भी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी divide numerator and denominator by n. So this is equivalent to nx divided by n is x divided by 1 plus 1 by n. As n tends to infinity, 1 by n tends to 0. So this is equivalent to x upon 1, which is equivalent to x. So the limit n tends to infinity un plus 1 divided by un is equivalent to x. So the given series converges for x is less than 1 because of D'Alembert ratio test. Therefore, by D'Alembert ratio test, the given series converges for x is less than 1 and diverges for x is greater than 1, and the test fails for x is equal to 1. The options are converges for x is greater than 1, wrong option. ये converge हो रही है अगर x, यहाँ पे मैं लिखूंगा. Therefore, by ratio test, the given series converges. फॉर कन्वर्ज कब कर रही है, जब लिमिट होगा लेस देन 1. यहाँ पे लिमिट है x, फॉर x इज लेस देन 1. ये कन्वर्ज होगी फॉर x इज लेस देन, और डाइवर्ज होगी फॉर x इज ग्रेटर देन. सबसे पहले आप ये देखो, ये कोई ऑप्शन है कन्वर्ज फॉर x इज लेस देन 1. अगर नहीं है फिर देखेंगे वो कोई ऑप्शन है डाइवर्ज फॉर x इज ग्रेटर देन 1. कन्वर्ज फॉर x इज ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेस फॉर x इज लेस देन 1. यस, ऑप्शन बी ही यही कह रही है. ये जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है फॉर x इज लेस देन 1. दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, now question number 12 is